जब मैंने अपना पहला रेसिडेंसी किया था, so the owner of the club, he told me to not put my name Abhishek Karua in the flyer. Okay. He said that Karua is a unique surname and you should use this. Okay. So I was not very fond of that idea, but thankfully अभी ऐसा लगता है कि DJ Karua is better. आज जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, they start by knowing कि how much money they can make. उस टाइम पे वो फैक्टर था ही नहीं कि how much money I can make. ये करना है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट. मनी एंड एवरीथिंग जो भी था वो बाद में समझ में आया कि हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम दिस. So personally, what do you like? Playing for weddings or playing for clubs? What tough question. So, but I would say both. Okay. Yes, because I started as a club DJ. वहाँ से I got the recognition, and then I eventually moved into wedding also. हेलो एवरीवन, once again this is रितेश राटा. हम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं. We have invited a lot of wedding experts and we make sure that we keep these videos short. चले, let's go. Hello friends, this is Pritesh Ragta. Welcome to exclusive podcast with Aishan. So today we have DJ Karua with us. So DJ Karua is one of the most experienced DJ in wedding and club fraternity. He's been DJing from last 15 years, almost 1.5 decade. So let's hear from him. Hi DJ. Hello. Welcome. Thank you so much. How are you? Good, very good. Let me just ask you first question. How did you start your journey? Because I know a bit about you. You are not from this usual background. So how did you start? How did all it happen? So I grew up in Jamshedpur, and I was always willing to do something different. So I started as a dancer in school. So, and it was very difficult in my school also to get renowned or known as a dancer or in the city. So I was able to make that spot for myself. And eventually I saw Tiesto performing for the Olympics. And I got very excited by what I saw. So I really had already made up my mind since school time that I wanted to become a DJ. So it's a little, too early for someone to decide in school कि हमको क्या करना है. So I was not very keen on getting into any educational background. So I came to Pune in 2006 for my higher education, and I learned DJing after a few years, and since then I have continued in this path. Oh, great. Yeah. So DJ Karua is your, your Stage name. Stage name. Yes. What is your actual name? So my name is Abhishek Karua. Abhishek Karua. Yes. Okay. So जब मैंने अपना पहला रेसिडेंसी किया था, so the owner of the club, he told me to not put my name Abhishek Karua in the flyer. Okay. He said that Karua is a unique surname and you should use this. Okay. So I was not very fond of that idea. I wanted Abhishek Karua. बट उन्होंने ज़बरदस्ती फ्लायर पे डीजे करवा मेंशन करवा दिया. Okay. एक बार वो आ गया एंड लोगों को पता चल गया, सो आई हैड टू कंटिन्यू विद दैट. बट थैंकफुली अभी ऐसा लगता है कि डीजे करवा इज बेटर. Yeah, it's a unique. It's a unique name. अभिषेक इंडिया में इतना कॉमन नेम है कि स्कूल में अगर कोई अभिषेक बुलाता था तो 30-40 लोग मुड़ के देखते थे. हाँ. उस हिसाब से करवा इज मच बेटर. I know. Okay, so when you're talking about school days, like when you started, you decided that in school only that you want to get into DJing. Yes. देखिए वो टाइम ऐसा था. आई रिमेम्बर बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट टाइम. सो तभी बच्चे एक ही चीज़ डिसाइड करते हैं, तो 2-3 चीज़ें डिसाइड करते थे. इंजीनियर बनना है, CA बनना है, डॉक्टर बनना है, या कोई तो बोलता था टीचर बनना है. Yes. थोड़ा बहुत बाद में MBA का फैड चालू हुआ था. तो वॉज इट ईजी to convince your parents, or how was that journey? So parents को थोड़ा already convincing हो चुका था when I had made some name in dancing. So and when I came to Pune, तो फिर I told them कि मेरे को ये करना था. So I already had taken up a job. So I started working from the age of 18. Okay. And I started working in MNCs. I started with Wipro as my first job. So उनको पता था कि ये आज जॉब कर रहा है, but I told them that this is my future goal and this is something that I want to do. So touch wood, my parents gave me the green signal कि करो. If you feel
दिस इज ओके, बिकॉज उनको ज़्यादा पता नहीं था. उनको क्या, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं था कि इसका आउटकम क्या होने वाला है. करेक्ट. सो आज जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, दे स्टार्ट बाय नोइंग कि हाउ मच मनी दे कैन मेक. उस टाइम पे वो फैक्टर था ही नहीं कि हाउ मच मनी आई कैन मेक. करेक्ट. ये करना है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट. मनी एंड एवरीथिंग जो भी था वो बाद में समझ में आया कि हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम दिस. ओके. सो दैट वाज द होल आइडिया. Oh, great. So, what is your qualification? So I have done my graduation. Okay. And after graduation के बाद जब मेरे पास opportunity था that I could do my masters because I was working with another multinational company. उन्होंने मेरे को offer किया था that they will sponsor my MBA. But I chose to quit the job rather. Oh, great. And they were willing to sponsor the MBA and also give me a promotion with that. Okay. So, but I rather quit the job. And I took a course for electronic music production. Okay. So I had to go to Bombay. तो मेरे को एक साल बॉम्बे में रहना पड़ा वो कोर्स करने के लिए. And then I came back to Pune. So now, fortunately, I did that course, so I'm able to produce music. Oh, so you produce music also? Yes, so I produce music for myself. Also, I am a ghost producer. Okay. So I produce for other artists also. Oh, great. So singers and DJs, I produce for them also. So that also you do it along with your DJing career, or Yes. you have a different setup for this? So I do it mostly from my home studio. अच्छा. So जहाँ पे मेरे को अपना एकांत एक पीस चाहिए, कोई नहीं चाहिए. I just want to do my thing. So that is mostly. So earlier I used to do all of that work in the night. Okay. But eventually जब I have spent more time, क्योंकि एक DJ के लिए सबसे challenging part हो जाता है traveling, because you have to take early morning or weird timing flights. फिर आप उस सिटी में पहुँचो, फिर वहाँ पे होटल में जाओ एंड देन गो फॉर साउंड चेक, अगेन कम बैक टू द होटल, अगेन गो टू द वेन्यू. तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है सब कुछ एक दिन में करने के लिए. Correct. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड विद अ बैलेंस्ड लाइफ दैट आई वेक अप बाय 7 or 8. सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू बिलीव कि कोई डीजे 7-8 बजे उठते हैं. बट ट्रस्ट मी, आजकल बहुत सारे डीजेस सब यही टाइम फॉलो करते हैं, सब उठते हैं. एंड एवरीबडी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ गोइंग टू द जिम और क्विटिंग एल्कोहल and staying very healthy, मतलब एक healthy lifestyle को maintain करना. So I mostly prefer producing music during the morning time. Okay. Because एकदम fresh उठना, the brain is all, the canvas is all empty. So it's the best time for me right now to produce music. Oh, wow. And then shows though mostly is during the night time, so it works. It's a balance. That's great. Okay, so when we talk about weddings, and DJ is very, very important in any wedding. Right. Like any Indian wedding, I can't imagine a wedding happening without the DJ. Right. Because now Sangeet, like I know that there are many religions or regions in India. Weddings are different in every part of India. But DJ is someone who is like who is the soul of every wedding. Yeah. Whether it is happening in north, south, east, west, everywhere. So you must have performed in all kind of weddings. So can you just tell us some experiences of yours in performing in weddings? So सबसे मज़ा आता है when you're performing in weddings in different states. So as a DJ, for example, if I'm performing in any state, let's say that I'm performing in West Bengal, so I have to download some Bengali songs, and so I like to surprise them with the songs that they have the raised जो सुन जो लोग बड़े हुए. Correct. So I try to play something retro from their own language. Okay. So that it's a fun part. So and people really appreciate such efforts. Correct. And उनको मज़ा आता है in the flow. So that is what I have always tried to do. And my objective is that जहाँ पे भी if I am going, I always try to make it the most memorable night of their life. So that's important. So because it's not necessary that we might meet again, but उनको ये लम्हा याद रहना चाहिए is what I have always tried for. And that's my main hustle. Good. So when did you start doing weddings? Like I understand you must have started with the clubbing, or how it was? So I started with clubbing because obviously वो मेरे को सबसे ज़्यादा attract किया था at that point of time. And I started with hip hop and house music. Okay. क्योंकि तब वो एक hip hop and house music का trend था. And I was not playing Bollywood at all. But फिर एक ऐसे कहावत है कि you can not play Bollywood in a club, but Bollywood will always be there. Correct. Everywhere in India. Correct.
So I understood the need of Bollywood and I started playing Bollywood. And eventually someone offered me a wedding gig. So I wasn't too sure. पहला वाला थोड़ा मतलब समझने में सीखने में चला गया. And lot others also. Eventually I got into, but both are very different when it comes to club gigs and wedding gigs. वो काफी अलग रहते हैं. Yeah, so this was my next question. Okay. So can you tell us some differences? What are the major differences? Because sometimes what happens is like, people go to club, they listen to some really good DJ and then they hire them for the wedding. Right. And if that particular DJ has not played in the wedding, then there might be some discomfort. So how it works? Yeah, like I told you, the first time when I performed in a wedding, तो थोड़ा mainly discomfort था, but it was a learning process. So a few weddings in the start were really a learning curve. तो होता क्या है कि जब आप क्लब में प्ले करते हैं, so this is coming from all my experience, other DJs could disagree with this. तो जब आप कोई wedding में क्लब में perform करते हो, तो the DJ is playing his own music. Okay. In the sense कि उसका अपना एक फ्लो होता है जो घर से सोच के आता है कि आज मेरे को ये गाना से स्टार्ट करना है, बीच में यहाँ पे ये प्ले करना है, एंड में ये प्ले करना है. So in a 2 hour set he is completely planned everything. क्राउड कैसे रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से द डीजे विल मेक सम चेंजेस एंड माइनर चेंजेस. बट मोस्ट ऑफ द डीजेस डोंट लाइक टेकिंग रिक्वेस्ट इन अ क्लब बिकॉज दे हैव देयर ओन थिंग. सो लाइक वी से दैट वी डोंट आस्क यू व्हाट टू ड्रिंक, सो डोंट टेल अस व्हाट टू प्ले. सो ये क्लब का फॉर्मूला है. So is it with every club or this is how you do it? So most of the established DJs don't want request. Okay. बिकॉज वो अपना एक फ्लो के साथ आते हैं, वो लोगों को एक जर्नी पे लेके जाना चाहते हैं. Okay. तो वो किसी के रिक्वेस्ट से वो जर्नी को तोड़ना नहीं चाहते. Okay. तो वो हो गया पूरा क्लब का फॉर्मूला. एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द क्लब्स, गुड क्लब्स वेयर वी परफॉर्म, द डीजेज आर नॉट अप्रोचेबल इन द सेंस दैट कोई डीजे तक पहुंच ही नहीं सकता बिकॉज देयर आर बाउंसर्स अराउंड. करेक्ट. तो और बार ऊपर भी रहता है, एलिवेटेड रहता है, तो आप डीजे तक पहुंच ही नहीं सकते रिक्वेस्ट के लिए. वेडिंग्स एकदम ऑपोजिट, because it is a event that it is a private event, so that's why we want to play what the client wants. Okay. So पहले ही हम मतलब मेरा objective पहले यही रहता है to connect with the client, let's say bride and groom. So I want them to give their song request well in advance. Okay. So that I am already prepared कि उनके song request क्या है. Let's say उन्होंने 20-30 गाने का request दे दिया कि हमको ये चाहिए, और मे बी इन देयर ओन लैंग्वेज अगर उनको लेट्स से गुजराती में कुछ गाने चाहिए, आई डाउनलोड ऑल ऑफ दोस सॉन्ग्स एंड आई एम गोइंग फॉर द वेडिंग. ऑल्सो व्हेन आई एम परफॉर्मिंग एट अ क्लब, आई ऑलरेडी हैव माई पेन ड्राइव में जो गाने फीडेड है उससे ही, मतलब लेट्स से 1000 गाने हैं तो 1000 में से ही सब गाने प्ले हो सकते हैं. वेडिंग में ऑलवेज इंश्योर दैट आई एम कैरिंग माई मैकबुक. तो कुछ भी अगर किसी का ऑन स्पॉट भी रिक्वेस्ट आता है, सर डाउनलोड द सॉन्ग एंड आई प्ले इट फॉर दैट. Okay. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. And this is how every DJ does it. Most right? of the DJs function in this way. Yes. I think that is more convenient for the client also because वहाँ पे कोई ना कोई तो आपको रिक्वेस्ट देगा ही देगा और आप सबको टर्न डाउन नहीं कर सकते. Absolutely. और तो कोशिश करते कि सबको खुश करें, मतलब everyone should have a great time and remember this. So we ensure in a wedding कि हम सबको खुश करके सबका रिक्वेस्ट ले लें, मतलब ऐसे. और वेडिंग्स में ऐसा हो जाता है that if a song is requested दूसरे बार प्ले करने के लिए, लेट्स से जमल गुरु आजकल सबका फेवरेट, तो लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिक्वेस्ट कर देते, वी प्ले. क्लब में हम उसको नहीं कर सकते. क्लब में अगर हम प्ले करते तो लोग बोलते हैं इस डीजे के पास सिलेक्शन नहीं है, उसीलिए रिपीट कर रहे हैं. तो क्लब में हम कभी कोई गाने रिपीट नहीं को. बट वेडिंग्स में दे नो दैट ये अपने ही लोग हैं, इसमें 5 बार बजे 10 बार बजे तो नो वन इज गोइंग टू जज द डीजे आल्सो. करेक्ट. तो उस हिसाब से बिकॉज दे हैव रिक्वेस्टेड इट. करेक्ट. तो उस हिसाब से वी हैव दैट लिबर्टी इन अ वेडिंग टू, मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ऐसे से. So personally, what do you like? Playing for weddings or playing for clubs? What tough question. So, but I would say both. Okay. Yes, because I started as a club DJ. वहाँ से I got the recognition, and then I eventually moved into wedding also. So I like playing for both. Wedding में there is a slight advantage that I feel for myself. I feel that I'm a part of something special happening. So because every wedding for that family is too special, and if they have involved me in any way, so I really feel that I am
really honored on that particular day that I am a part of it. And music, as you said, कि बहुत important part होता है. If I am able to make all faces happy, तो उससे बड़ा बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता. Actually, yeah. Because as I said, I never started it for money. Money followed later on, सब कुछ जो भी हुआ, but I always started to make people happy and सबको खुश करने. अच्छा यार, हमको भी सिखाओ बिना पैसे कमाए कैसे पैसा कमा सकते हैं, बिना सोचे पैसा कमाने के लिए. So definitely, you're most welcome. So I have COVID से पहले I have taught more than 500 students. Oh, great. Yes. So my students play in different cities. So they are from different states. Okay. So if I ever start my academy, so you're most welcome. नहीं तो आप ऐसे भी आ सकते हो. Okay. DJ, if you can just tell us what is the process normally you follow, or what should be the ideal process whenever somebody is trying to get in touch with you for their wedding gig. Right. So what is the process which you want them to follow and you follow, which is the best in both perspective? Sir, अभी कैसा है कि thankfully since the past 20 years maybe, तो ये जो ट्रेंड आया है that there are wedding planners, उससे ये चीज़ें काफ़ी simplify हो गया, because they are a bridge between the artist and the client. Correct. So they know both the perspectives. So what you're doing, that is an incredible job, because it helps both the parties very well. So, but apart from that, जो आपका question है, so I'll definitely answer that. उसमें कैसा है that बहुत सारे लोग को first जानना चाहिए that इस artist ने कितने weddings में play किया है, Okay. और कहाँ weddings में play किया है. तो just get an understanding कि इसका weddings का experience क्या है. Correct. क्योंकि अगर कोई सिर्फ क्लब में ही प्ले कर चुका है, क्लब के म्यूजिक इज लाइक बैंगर्स, रिमिक्सेस, जो वेडिंग्स में थोड़ा कम ये होता है, बिकॉज वेडिंग्स में दे वांट मोर ऑफ रेट्रो, दे वांट मोर ऑफ ओरिजिनल म्यूजिक, सो विच इज नॉट समथिंग जो क्लब में आपको मोस्टली सुनने मिलता है. द क्लब्स डीजेज आर मोस्टली रिमिक्सेस एंड सम अदर एलिमेंट्स कम इन, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो साउंड्स होते हैं तो वो वेडिंग्स में प्रेफर्ड नहीं होते हैं, इंडियन वेडिंग्स में. सो फर्स्ट उनको ये समझना पड़ेगा कि ये कितने वेडिंग में प्ले कर चुका है. सो ना दैट इज नंबर वन. दूसरा, बहुत बार क्लाइंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि जब वो डीजे को बुक कर रहे हैं, द डीजे इज कमिंग विथ साउंड एंड डीजे कंसोल एंड माइक, सब कुछ लेके आ रहा है. सो वो 99% चांसेस केसेस में वो नहीं होते. डीजे इज कमिंग विद द पेन ड्राइव, लैपटॉप, हेडफोन, बस उतना ही लेके आता है. दे नीड टू आस्क द डीजे कि उसका टेक राइडर क्या है. So sound, tech rider, everything has to be provided from the client's end. अगर उनके पास कोई contact नहीं है, so then they can approach a wedding planner and the wedding planner can sort it out for them. So these are the main two criteria. And जैसे मैंने बताया पहले कि if they are able to give them a song list that ये हमको songs चाहिए in the functions, and if they can give them the event flow, तो डीजे के लिए पहले से ही वो प्रिपेयर्ड होके आता है, देन ये सारे गाने प्ले करने ही है, इवेंट फ्लो ऐसा है. सो सब कुछ बहुत स्मूथली उस हिसाब से फिर फंक्शन होता है. So do you also ask them what kind of guest list they have? Like, people are from which religion, which region, which part of country or which part of the world are attending the wedding. Is it also important for you to know? Definitely, because the more information you have, so the better you are prepared for the performance. Because if you know your crowd and if you are able to read them well, so that's the job of a DJ. Because what differentiates one DJ from another DJ? हर DJ के पास गाने तो वही है, but जो flow होता है and डीजे का एंड जो उसका जो एबिलिटी होता है क्राउड को जज करने का, रीड करने का, वो एक डीजे दूसरे डीजे से डिफरेंशिएट उसी से. सो इम्पोर्टेंट वही है कि आप क्राउड को कैसे समझ पा रहे हो कि उनका टेस्ट क्या है. सो अकॉर्डिंगली आप अपना म्यूजिक उनको दोगे. सो इसमें मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमेशा लगता है, जो हमेशा मैं देखता हूँ, बिकॉज आई हैव वर्क विथ यू, वर्क विथ सम अदर डीजेज ऑल्सो, वेरी गुड डीजेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. And some of them are really very good, right, including you. So they are like, जब गेस्ट सामने रहते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि गेस्ट को कभी जरूरत ही नहीं पड़ता है बहुत बार आके और पूछने की कि भी ये गाना बजा दो. बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं उनको कैसे समझ में आता है, वो गाना बज जाता है. ठीक है,
तो वो मज़ा करते हैं, क्योंकि वो भी समझ में आता है कि when people are dancing continuously till 2 o'clock, 3 o'clock in the night, इसका मतलब DJ is doing a good job. बिल्कुल. Okay, so my question, this I always used to ask, to a lot of DJs during the event or after the event, कि यार ये तो सब लोग जो है ना अलग अलग हैं. इसमें कोई चाचा जी भी हैं, दादाजी भी हैं, बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं. फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि आजकल कैसा हो ना, बहुत इंटरकास्ट वेडिंग्स भी होता है. तो ऐसा नहीं केवल मारवाड़ी वेडिंग है या केवल पंजाबी वेडिंग है. तो आज किसी पंजाबी वेडिंग है तो भी उनकी उसमें क्योंकि फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. तो अलग अलग कम्युनिटी से लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग रहते हैं. कभी कभी पीपल आर देयर फ्रॉम फॉरेनर्स आल्सो देयर एज अ फ्रेंड्स. तो हाउ डू यू गो अबाउट इट यार? मतलब वेरी डिफिकल्ट कि यार ये आदमी तो 10 लोग फॉरेनर है, 50-60 लोग नाच रहे हैं, उसमें से 10 लोग फॉरेनर हैं, 10 लोग इधर के हैं, 10 लोग उधर के हैं. एज डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. कैसे कर लेते हो यार आप? सर देखिए, कैसा होता ना, डीजे कभी भेदभाव नहीं करता. डीजे के लिए सब एक है. अब क्लब में भी आप जाएंगे तो एक नॉर्मल देयर इज अ सेक्शन फॉर नॉर्मल, मतलब जिन्होंने नॉर्मल एंट्री लिया है, देन देयर इज अ वीआईपी सेक्शन, फिर ऊपर कहीं वीवीआईपी रहता है. वो क्लब इज बेनिफिटिंग फ्रॉम देम इन टर्म्स की कैसे वो टेबल सेल कर रहे हैं, कौन सा हायर, कोई टेबल 50,000 का है, वीवीआईपी 2 लाख रुपए का है. ये लोग जो आए हैं सब 5,000 रुपये दे के आए हैं. बट हमारे लिए सब सेम, हमारा एक ही मोटिव है, सबको डांस कराना, करेक्ट, सबको खुश रखना. सो वेडिंग्स में भी जैसे आपने बताया कि कोई भी स्टेट से आया, फ्रेंड्स आया है, कोई गुजरात से, मामा चाचा आए हैं पंजाब से, इफ द ग्रूम इज फ्रॉम बंगाल एंड ब्राइड इज फ्रॉम लेट्स से हिमाचल, बट हमारे लिए सब एक है. तो हम सबको एक ही में रख के कंडक्ट करते हैं कि हम ऐसा म्यूजिक प्ले करें जो सबके लिए ये है. दूसरा चीज, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था दैट समवन हैड गिवन मी अ कॉम्प्लीमेंट कुछ साल पहले. उन्होंने बोला था ये डीजे नस पकड़ के रखता है. तो समझने में मेरे को टाइम लगा कि वो क्या बोल रहे थे, बाद में मेरे को समझ में आया. तो वही है कि अगर वो डीजे में एबिलिटी है कि अगर वो क्राउड का नस पकड़ के रखे, करेक्ट है ना, अगर डीजे के हाथ में कंट्रोल है सबका, तो लोग खुश होके जाएंगे, वो गारंटीड है. तो नस कैसे पकड़ते हो, वही समझना था सर. वही एक्सपीरियंस है. अब आई आस्किंग इट नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं है. वो मतलब डीजेइंग में 2 एस्पेक्ट है, एक है साइंस, एक है आर्ट. साइंस क्या है कि टेक्निकली एक गाना को दूसरे गाना को कैसे मिक्स किया जाए. दैट इज मोर लाइक कि आप ड्राइविंग स्कूल गए, आपको उन्होंने कार चलाना सिखा दी. बट आर्ट क्या है कि आप वो कार से कैसे ड्रिफ्ट कर, आप उससे क्या कर्तव्य करके दिखा रहे हो. सो वो है आर्ट कि डीजे कैसे लोगों को पकड़ के रखे, सबको एक साथ रखे, सबको एक ही सॉन्ग से कैसे, मतलब एक फ्लो में कैसे सबको खुश रखें. बिकॉज आपका फ्लो टूटा तो लोग फिर बोलेंगे ना मज़ा नहीं आ रहा, तो और समवन विल जस्ट गो आउट फॉर सम ब्रेक और समथिंग. बट वो फ्लो पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है. तो उसी लिए हम उस चीज़ को ये करते हैं, और वो एक्सपीरियंस से ही आता है सर. करेक्ट. मतलब इट इज़ समथिंग दैट ऐसा कोई सीख के कहीं से नहीं आ सकता, वो एक्सपीरियंस से ही आता है. तो मैं गलत सोच रहा था कि मैं सीख लूँगा आपसे आज. नहीं बिल्कुल. ओके. सो क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे हमेशा लगा है कि सब लोगों का चॉइसेस अलग रहता है. जी बिल्कुल. सब लोगों का म्यूजिक प्रेफरेंसेस अलग रहता है, म्यूजिक टेस्ट अलग रहता है. तो भी सब लोग वहाँ पे एक साथ नाचते हैं. राइट. और कोई ऐसा नहीं कि एक ग्रुप बेचारा बोर हो रहा है और 4 लोग नाच रहे हैं, 6 लोग बैठे हैं, वैसा नहीं, क्योंकि हमेशा सब नाचते हैं. तो वही होता है कि हमको ऑल द टाइम आप देखेंगे तो डीजेस मोस्टली सिर्फ सामने देखते हुए परफॉर्म करते रहते हैं. मतलब बिकॉज हमारा कंसोल तो नीचे होता है, हम लोग दो फ्यू सेकेंड्स के लिए हम लोग नीचे देखते हैं. जब मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करते टाइम भी मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंस डीजे ऊपर ही देखते हैं, बिकॉज वो देखते रहते हैं कि कोई ऐसा है क्या जो ग्रुप या कोई इंडिविजुअल जो बहुत देर से रुका हुआ है, खड़ा है. तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको नचाने के लिए हम लोग क्या ट्रैक प्ले कर सकते हैं जिससे बाकी लोग डिसअपॉइंट ना हो. ऐसे नहीं है कि हम लोग बॉलीवुड प्ले करते करते उसके लिए ट्रांस प्ले कर दिए, वो फिर ऐसा हो जाएगा कि एक को खुश करने के चक्कर में 99 दुखी हो जाएंगे. तो हम ऐसा कुछ प्ले करने की कोशिश करते हैं जिससे ये भी खुश रहे और वो भी डांस फ्लोर पे हमारे साथ ज्वाइन करिए. तो दैट इज ऑलवेज द मोटिव कि हम लोग देखते रहते हैं कि एवरीवन विथ अस ऑन द सेम पेज. Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it.
Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.